Good afternoon, class 10th. In the last video related to application-based questions of linear equations in two variables, we have covered a type which was on the base of articles, cost, production of items, and so on. Okay. In this video, I'll be covering two topics. The first topic is the questions based on the numbers and the geometrical figures. So let's start with the questions straight away. These are two questions, and I'll take as per the difficulty level. So let's start with this question. Question is the sum of the two numbers is 35. The sum of two numbers is 35 and their difference is 13. So there are two numbers and their sum is given and their difference is given. Guys, make sure one thing, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी वर्ड डिफरेंस आएगा तो एक नंबर बड़ा होगा और एक छोटा होगा. सम में कोई डिफरेंस नहीं है. लेट्स सपोज आई एम टेकिंग टू नंबर्स x एंड y, तो उनके सम x प्लस y इज इक्वल टू y प्लस x बिकॉज द एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर बट डिफरेंस इज नॉट कॉम्यूटेटिव. तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन में वर्ड डिफरेंस आ गया तो आपने क्या लिखना है, लेट द लार्जर नंबर is x, assume कर लेना एक नंबर बड़ा और एक छोटा है, and the smaller number is y. Okay. Now, according to question, the sum of the two numbers is 35. So x plus y is 35 and their difference is 13. तो clearly अगर x बड़ा है तो x में से y subtract होगा, which is given as 13. So let's find it them out. X plus x 2x, elimination लगा दी, and here comes 48. So therefore x comes as 24 and y comes out to be 35 minus 24, which is 11. Is that clear? अब खुद देख लो, 24 and 11 is 35, 24 minus 11 is 30. Is that clear? कुछ school of thoughts ऐसे भी कहते हैं कि there can be generated two cases. One is y minus x or one is x minus y. कभी नंबर सेम आएगा, बट दिस इज क्लेवर मूव और स्मार्ट मूव इन विच वन वी कैन से कि हम assumption ही ऐसे ले लें कि दो नंबर है, एक बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन. और हमेशा मैंने आगे भी आपको कहा था एंड हमेशा यही करना है. देयरफॉर फाइंड देम, तो टू नंबर्स है, देयरफॉर द टू नंबर्स आर, हम अब यहां लार्ज स्मॉलर नहीं लिखेंगे. Therefore, the two numbers are 24 and 11. Okay. So let's move on to the another question. The difference between the two numbers. Here word आ गया difference. Difference between the two numbers is 26. And one number is 3 times the other. तो clear कटा गया, एक नंबर दूसरे से 3 गुना है तो वो बड़ा नंबर होगा. ठीक है. So let's create again. Let the larger number is equals to x, difference भी है, ये दोनों तरफ से हिंट मिल गया, and the smaller number is equals to y. So according to question, the difference between the two numbers is x minus y is 26 and one number is 3 times the other. तो obvious है x बड़ा है तो x is 3 times the other, तो 3 times y. तभी दोनों इक्वल होंगे ना. अगर ये छोटा 3 इससे मल्टीप्लाई होगा. तो let's substitute this over here. So put x is equals to 3y. Substitution लगा रहा हूं in equation number 1. So 3y minus y is equals to 26. 2y is 26. So therefore y comes out to be 13. So if the y comes out to be 13, so therefore x क्या आ गया, 3 times y, 3 times 13, which is 39. So the two numbers are, find the numbers. So therefore the two numbers are 39 and 30. Is it clear? So जब भी याद रखना है डिफरेंस आएगा तो एक नंबर बड़ा होगा और एक छोटा होगा. Another very important questions, and it says two numbers are in the ratio 5:6. कोई दो नंबर्स है, रेशियो उनकी है 5:6. If 8 is subtracted from each number, the ratio becomes 4:5. So let's start the question. Let the फर्स्ट नंबर, क्योंकि यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है तो आप सीधा फर्स्ट और सेकंड नंबर कह सकते हो, तो x एंड y. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6, तो इनकी रेशियो क्या आ गई 5:6. ओके, सो आप क्या लिख सकते हो 6x इज इक्वल्स टू 5y. ओके, अनदर इक्वेशन, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, तो दोनों में से 8 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, then the ratio becomes 4:5. Okay, so this becomes 5x minus 40 is equals to 6y minus 20. 8 4s are 32. Okay, so this is not 4y minus 32. 8 4s are 32. So this becomes 5x minus 4y is equals to 8. This is my first equation, and this equation is 6x minus 5y is equals to 0. So we have two equations. Let's solve these two equations simultaneously. So let multiply this by 5 and let multiply this by 6. So 30x minus 25y is equals to 0 and 30x minus 24y is equals to 48. Okay, minus plus minus, so cancel, and minus 25 upon 24 plus 24 is minus y is minus 48, so therefore y comes out to be 48. Is that clear? Now other number, so put it over here, or I do it over here. 6x is equals to 5y, y is 48, so therefore x comes out to be 5 into 48 upon 6. 6 1s are, 6 8s are, so x comes out to be beta 40. So therefore the two numbers are 40 and 48. Then the ratio is 5:6. Clear? Let's move on to the next question. Guys, this is the most important question. बहुत बार एग्जाम्स में, बोर्ड में ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, एंड यू विल फाइंड सच क्वेश्चंस, मोर देन 15 क्वेश्चंस इन द असाइनमेंट, इन द Xenix assignment, and so must practice these questions back at home. Quite important question. Okay, now please understand it carefully. The sum of digits of a 2-digit number. So there is a 2-digit number and their sum is 9. तो कैसे नंबर हो सकते हैं? सोचो कि कोई 2-digit नंबर है जिनके डिजिट्स का सम 9 है, जैसे कि 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5, 5 4, 6 3, 8 1 और 7 2 and 8 1. और 09 is not a 2-digit number but 90 is a 2-digit number. ठीक है, तो मतलब मेरा आंसर तो इनमें छिपा हुआ. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सम ऑफ डिजिट्स, हर डिजिट का सम, दोनों डिजिट्स का सम 9 आ रहा है ऑफ अ 2-digit नंबर. ठीक है, अगर यही एमसीक्यूज की फॉर्म में है तो जनरली वी गो बाय द आंसर्स ओनली. ओके, ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. मैं इस पे बाद में आता हूं, पहले क्रिएट करते हैं. और इफ इट इज अ 2-digit नंबर, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड टेंस प्लेस, दिस इज कॉल्ड वंस प्लेस. ये तो बचपन में पढ़ा हुआ. ठीक है, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस is x and the digit at tens place is y. So therefore the 2-digit number क्या बनेगा? Therefore the 2-digit number is 10 times the number at 10th place plus 1 times the number at ones place. तो ये क्या बनेगा बेटा? 10y plus x. ठीक है, so 2-digit number will be 10y plus x. जैसे कि देखो 18 है, 18 जो बना 10 times 1 plus 1 times 8, तो क्या बन गया? 10 plus 8 18. So this is how this formation is done. Okay, so the sum of digits of 2-digit number is 9. So according to question, x plus y की वैल्यू किसके बराबर आ गई है? 9 का. ठीक है, also let's read it very carefully. Also 9 times this number, जो ये नंबर आया है इसको 9 टाइम्स कर दो, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स.
वो क्या कह रहे हैं, इनको अगर रिवर्स कर दो, 8 और 1 कर दो या 7 और 2 कर दो, मतलब is twice the number if we reverse the order. So on reversing order, the 2-digit number will be 10x plus y. मतलब y ने x की जगह ले ली, x ने y की जगह ले ली. So according to question, मेरी दूसरी इक्वेशन यहां से जनरेट हो रही है, is equal to 10x plus y. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9 times this number, जो नंबर एक्चुअल नंबर है 10y plus x, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digits. So let's create the equation. 90y plus 9x is equals to 20x minus 2y. तो इधर ले आइए 90y माइनस, उधर ले जाइए 20x माइनस 19x is 11x माइनस 2y, गलती कर रहे हैं, अच्छा ये प्लस 2y बेटा, ओके 2y माइनस 90y is माइनस 88y. तो अगर मैं 11 कॉमन भी निकाल दूं तो क्या बना, x माइनस 8y is equals to 0. So this is my second equation. So we have two equations to solve. To find the values of x and y, let's do it. X minus 8y is 0. This got cancelled. ठीक है, change of sign. Y plus 8y 9y is equals to 9. So y comes out to be 1. So y comes out to be 1. And let's find x. So therefore x is equals to 8y, or x is equals to 8 into 1, which is x is equals to 8. So therefore the two-digit number, उन्होंने 2-digit number ही कहा था, will be equal to 10y plus x, 10y plus x, तो 10 into 1 plus 8, so 10 plus 8 is 18. So by chance it is the same answer जो मैंने example लेके चल रहा था. So you get these kind of questions are very important, and mind my words, this is the most crucial step to understand what is the actual number, and on reversing the y will takes x value and x will takes y's value. Now these two questions are on the basis of geometrical figures, and let's understand the larger of the two supplementary angles. So what are supplementary angles? यहां पर दो तरह के एंगल्स होते हैं, एक सप्लीमेंट्री और एक कॉम्प्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम होता है 180, कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम होता है 90 डिग्री. The larger of the two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. Exceeds का मतलब ही डिफरेंस हो गया. So let the larger angle is x and the smaller angle is y. So according to question, पहली स्टेटमेंट क्या है, the larger of two supplementary angles, मतलब दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री, and the larger exceeds the smaller by 18, तो x minus y कितना आ गया 18 डिग्री. So cancel, 2x is equals to 198, so therefore x comes out to be 99 degrees. So if x is 99 degrees, so y will be x minus 18, so 99 minus 18 will be equal to 81 degrees. So दोनों का सम जो है 180 भी आ गया, और we have got the two angles. So the larger angle is x is equals to, ये आपने बाद में लिखना है वापस, is equal to 99 degrees and is equals to 81 degrees. That is my answer. Okay guys, let's move on to this question. Very 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 important question. ठीक है, ध्यान से समझना है, कुछ नहीं है, but yes, you require practice. You will find such questions in the sheet also. The area of rectangle gets reduced by 9 square units. किससे reduce हो रहा है? अगर मैं लेंथ को क्या करूं, length reduced by 5 units and breadth increased by 3 units. कहते हैं अगर मैं उसकी लेंथ को बढ़ा दूं, कम कर दूं और ब्रेड्थ को बढ़ा दूं, तो मेरा टोटल एरिया 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो जाएगा. और अगर इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, मतलब दोनों को अगर बढ़ा दूं, लेंथ को 3 यूनिट से और ब्रेड्थ को 2 यूनिट से, तो मेरा एरिया इंक्रीज हो जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट्स. फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लेट length of rectangle is x and breadth of rectangle is y. यूनिट्स लिख लेना, अगर वहां पे सेंटीमीटर हो तो वो यूनिट्स लिखने हैं, नहीं है तो सिंपल यूनिट्स. सो
देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है बेटा हमेशा लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, लेंथ को मैंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया 5 से, ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3, ब्रेड्थ हो गई 3 यूनिट्स एड, द एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया रिड्यूस होया, एरिया था कितना xy और ये 9 यूनिट से रिड्यूस हो, सो दैट इज द क्वेश्चन। सो लेट्स क्रिएट द इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, अगर मैं लेंथ को 3 से बढ़ाता हूं एंड ब्रेड्थ बाय 2, उसको भी 2 से बढ़ाता हूं, द एरिया इज इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, xy प्लस 67। ओके, so let's create the equation x into y is xy plus 3x minus 5y minus 15 is equal to xy minus 9. xy get cancelled, so मेरी equation बनी 3x minus 5y is equals to minus 9 plus 15 is equals to 6. So this is my first equation. Second equation is xy plus 2x plus 3y is equals to xy plus 67. xy cancel और प्लस 6 भी आना था, सॉरी, so 2x plus 3y is equals to 61. So guys, we have got two equations, so let's solve these two equations, multiply this equation by 2 and this by 3. तो ये मेरे पास बना बेटा 6x minus 10y is equals to 12 and 6x plus 9y is equals to 6 3s are 3 1s are 3, sorry, 6 3s are 18. Am I right? 3 1s are 3, 6 3s are 18. Perfect. Minus 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 cancelled. Minus 19y is equal to minus 3 में से 2 गए 1, 8 में से 7 और ये कैंसल, नेगेटिव कैंसल, y की वैल्यू आ गई बेटा 9, 19 9s are 171. So put कर दो यहाँ पे, so therefore 2x plus 3 into 9 is 61. 2x is equals to 61 minus 27. 2x is equals to 34 and x comes out to be 70. Okay, so therefore the length is given as, उन्होंने कहा ना find the length and breadth, 17 units लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखोगे तो you will get deduction in marks 9 units. और अगर एरिया पूछते तो एरिया क्या आ जाता हमारे पास 17 into 9, so this will be 153 square units. पूछा नहीं है बट पूछ सकते हैं, डायमेंशंस पूछें तो अकेला लेंथ ब्रेड्थ देना है, एरिया पूछे तो 153, पेरीमीटर भी पूछ सकते हैं, that further depends upon the difficulty level of the question, and you will find a lot of questions of this type in the assignment. Okay students, the next type is the applications on the basis of fractions, and these two questions I'll be doing. One is little easier and another is little heavier, the questions are quite same, and you will find more than 12 to 13 questions in the assignment on the basis of fractions only. Okay, so let's do this and let's understand it. A fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both numerator and denominator. And if 3 is added to numerator and denominator, it becomes 5 upon 6. Okay, so first of all we need to assume that what are numerator and what is denominator. Let the numerator is x and the denominator is y. So therefore fraction क्या बनी बेटा, fraction becomes x upon y. Okay, according to question. Now please understand what they are saying. If 2 is added to both numerator and denominator, numerator में भी 2 ऐड कर दिया और denominator में भी 2 ऐड कर दिया, the fraction becomes 9 upon 11. So that is my first part. Second, what they are saying, if 3 is added to both numerator and denominator, दोनों में हमने 3 ऐड कर दिया, then the fraction becomes 5 upon 6. So we have got two equations, two unknown, so let's find it out. 11x plus 22 is equal to 9y plus 18. So 11x minus 9y is equals to minus 4. This is my first equation. Similarly over here, 6x plus 18 is equal to 5y plus 15. Cross multiply किया, 6x minus 5y
is equals to minus 3. So guys, we have got two equations, two unknown, and let multiply this with 5 and this with 9. So we have got our equations as 55x minus 45y is equals to minus 20, and 54x minus 45y is equals to minus 27. Change of signs. So minus 45 plus 45 cancels. 55 minus 54 is x is equals to plus 27 minus 27. So x comes out to be 7. Put कर दें किसी एक में भी, and 6 into 7 minus 5y is equal to minus 3. So minus 5y is equals to minus 3 minus 42 minus 5y is equals to become minus 45. So y comes out to be 9. So therefore question was find the fraction. So therefore the fraction is x upon y, so which is equals to 7 upon 9. Is it clear? Got it? अब देखो खुद समझो, if 2 is added to both, 7 plus 2 9, 9 plus 2 11, so it will give you 9 upon 11. If 3 is added to both, 7 3 10, 9 3 12, 10 upon 12, which is 5 upon 6. Is it clear? So this is the answer. Let's do another question. If the numerator of fraction, so again I would say let numerator is x, denominator is y, so therefore fraction is x upon y. Okay, so according to question, if the numerator is multiplied by 2, so x multiplied by 2 is 2x, and denominator is reduced by 5, so y minus 5, the fraction becomes 6 upon 5. So first equation. Second, if the denominator is doubled, 2y हो गया, and numerator is increased by 8, x plus 8, and fraction becomes 2 upon 5. So we've got two equations. Quite easy question, guys. 10x is equals to 6y minus 30. So 10x minus 6y is equals to minus 30, and over here 5x plus 40 is equals to 4y, and 5x minus 4y is equals to minus 40. 5x plus 40, and multiply this by 2, तो ये बन गया मेरे पास 10x minus 8y is minus 80. So we have got two equations, same with the same variable. So let's solve these. 10x minus 6y is minus 30. 10x minus 8y is minus 80. Minus plus plus 8y minus 6y is 2y. 80 minus 30 is 50. So y comes out to be 25. Is it clear? So let's find x. So therefore 5x minus 4 into 25 is minus 40. 5x is equals to minus 40 plus 100 is 60. X comes out to be 12. So therefore fraction is x upon y, which is 12 upon 25. That's my answer. Clear? Quite easy question. So class 10th, today after watching this video you have to do your questions from 169 to 196 of the assignment. 169 to 196, and in the tomorrow's video conferencing, tomorrow's class, we will discuss all these problems. Thank you so much.